question does come to our mind. ऐसा होगा तो क्या होगा? So उसका solution यही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, so don't worry about it. The other thing is जब हम बात करते हैं about thesis statement. So I have tried like teaching thesis statements to my students, and honestly speaking, I have failed because and I realized that even students of CSS cannot write a thesis statement. Of course, there is a subtle difference between the thesis statement that we write here in IELTS and the thesis statement that they write in their essays. But again, the teachers of CSS also like suffer because they think that it is almost impossible to teach someone a correct way of thesis statement because people do not have the correct approach. Because usually a student, when it comes to a teacher, he's looking for a shortcut. He doesn't want a lot of struggle. And writing a thesis statement needs an academic approach. Fundamentally, you have to be sort of a person who is who belongs to the world of academia. So I have tried and I have failed. I accept that because it's almost impossible to develop this concept. So simple formula is copy and paste the thesis statements which you can see in the templates. That's it. That's the formula. So no struggle, just copy and paste it. So in any advantages and disadvantages essay, if it is open-ended, this is the thesis statement. Now there are two main benefits to whatever the topic is. Of course, there's the topic. Sir, इससे तो बड़ा easy हो जाएगा. Oh, of course, yes. That's why I have written this. जैसे भी मैंने बताया कि मेरा एक स्टूडेंट एहतिशाम है नाम उसका, उसने कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखा ही नहीं बिकॉज वो कह रहा था कि वो जहन से निकल गया, उसके टाइम मैनेज नहीं कर पाया, दिस एंड दैट. सो एंड पे क्या नतीजा निकला कि कंक्लूजन छोड़ के आया, लेकिन उसने टेम्पलेट यूज किया था तो ऑलरेडी इतना ऑर्गेनाइज्ड और अच्छा ऐसे था कि एग्जामिनर गेव हिम 6.5. एंड आज तक आई हैव नेवर गिवन 6.5 टू स्टूडेंट की जिसने कंक्लूजन ना लिखा हो. कोई कंक्लूजन ना लिखे तो मैं उसको 5 तो मतलब हद से हद मैक्सिमम 5. अदरवाइज आई वुड गिव 4.5. वेयर इज योर कंक्लूजन? विदाउट कंक्लूजन देयर इज नो एसे. लेकिन ये वजह है कि वो पूरा एक सीक्वेंस डेवलप हो जाता है और पूरा आइडिया वहां पे मौजूद है. तो अब इसी तरह टॉपिक सेंटेंस में हमने कहा कि भाई 2 मेन बेनिफिट्स, ठीक है. अब आप मुझे इस टेम्पलेट में बताइए कि कहां पे हैं वो 2 मेन पॉइंट्स, यानी कि 2 मेन बेनिफिट्स को मैंने किन सेंटेंसेस में मेंशन किया है. यस सर, एक ये द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इज दैट, और आगे इन एडिशन टू, अगर आपको याद हो तो पहले लिखा हुआ था लाइक फर्स्टली या इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसको मतलब वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन जाहिर कोई भी अच्छा सा एक्सप्रेशन. सो आई थॉट दैट दिस वन वाज वर्थ मेंशनिंग, सो मैंने लिखा द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इज दैट. ओके, यानी वहां से सेंस भी डेवलप हो रहा है कि 2 बेनिफिट्स तो आप मेंशन कर रहे हो, लेकिन उनमें से भी ज्यादा बेहतर या ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये वाला है. और दूसरा कहाँ पे है सर? इन एडिशन टू दिस डायरेक्ट बेनिफिट. अब आप देखें कि उन्होंने वहां पे लिखा था इन एडिशन, मतलब वो गलत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स रॉन्ग. एडिशनली भी लिख सकते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज लाइक समटाइम्स वी हैव टू लुक फॉर समथिंग व्हिच साउंड्स मोर नेचुरल, एंड आई एश्योर यू दैट I have tried to make it as natural and as better as possible. So is मतलब एक normal student can easily get like 6.5 or 7, even 7+ if he writes the rest of the data properly. In the same way, अब इसके अंदर भी again the formula we haven't forgotten. So if I say the main advantages here, so I'll have to answer why and how. So I have answered this is mainly due to ऊपर because वगैरह लिखा हुआ था टेम्पलेट्स में, I mean samples में. So मैंने ज्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन this is mainly due to, so इससे थोड़ा सटल सा आइडिया रहता है कि रीजन क्या थी. और उसके बाद मैंने without going for logical explanation का so what,
क्योंकि अब आपको याद होगा कि वहां पे सो व्हाट कौन सा कर रहे थे, हम एग्जाम्पल को ड्रॉप कर रहे थे, तो मैंने उसकी जगह पे एग्जाम्पल ऐड कर दी है. यू कैन ऑल्सो like remove the example and you might want to answer the question so what, so that's your choice. But I thought that, and I think actually because example is more important, तो मैंने so what को drop करके example को add किया. So यहाँ पे हो सकता है a particularly good example would be करके जो भी example है, whatever the example is. इसी तरह फिर दूसरा जो बेनिफिट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इन एडिशन टू दिस डायरेक्ट बेनिफिट, उसका फिर why को मैंने दिस इज बिकॉज ऊपर कहा था, दिस इज मेनली ड्यू टू, अब जाहिर उसको चेंज करना था, तो दिस इज बिकॉज. फिर सो व्हाट को आंसर करने के लिए कंसीक्वेंटली यू कैन ऑल्सो यूज द कंजंक्टिव एडवर्ब देयरफॉर अगर आप करना चाहो. फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो एंड पे एग्जाम्पल. ऊपर हमने कहा था अ पर्टिकुलरली गुड एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कहा अ कन्विंसिंग एग्जाम्पल, तो अगर थोड़ा सा चेंज रहे बस, दैट्स द पर्पस. सो ऊपर हमने मॉडल वर्ब यूज किया वुड बी, यहाँ पे हमने सीधे सीधे लिंकिंग वर्ब यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दिस एग्जांपल ऑफ दिस इज. सो पूरा एक पैटर्न आ रहा है. And now if you look at this body paragraph, you can easily identify the topic, sentence and the two main points. So let's see if you can do that. कोशिश कीजिएगा, बताइए. सर ये इन द फर्स्ट प्लेस XYZ. हाँ, तो वो जो XYZ है वो एक्चुअली क्या है कि वो एक डिसएडवांटेज है, जो भी डिसएडवांटेज आप मेंशन करना चाहो. तो अब फर्दरमोर, हाँ, तो फर्दरमोर से दूसरा जो है ना वो एडवांटेज, सॉरी डिसएडवांटेज वहां से शुरू हो रहा है. इसी तरह अगर आप देखें तो जो पहला है इन द फर्स्ट प्लेस, जहां पे हमने कहा, वहां पे अगर आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को देखें तो उसको फिर लिखने के बाद फिर एग्जांपल आ गई है. तो एग्जांपल में ऊपर हमने थोड़ा सा ज्यादा लेंथी रखा हुआ था कि पर्टिकुलरली गुड एग्जांपल वगैरह, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल भी रखा हुआ है ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि बस हर वक्त ही ओवर यूज ऑफ अनयूजुअल वोकैबुलरी. तो कभी कभार नेचुरल भी रखने के लिए थोड़ा नीचे आना पड़ता है. फिर उसके बाद दूसरी जगह पे गुड इलस्ट्रेशन का एग्जांपल को, यानी एग्जांपल तो कह दिया, 3 मरतबा कह दिया. A particularly good example, a convincing example, for example, हर मरतबा हर एंगल से हो गया. अब a good illustration कह दिया. और अगर आप चाहो तो एग्जांपल को फॉर इंस्टेंस के जरिए भी कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जांपल. तो मैंने यानी पैटर्न उस तरह से रखा हुआ है कि अगर आप इसको बस देख के इस्तेमाल करो तो कोई स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अब अगर आप इसका कंक्लूजन देखिए तो अभी आपको याद रखना चाहिए कि 2 फायदे और 2 नुकसान हमने मेंशन किए हैं. अब देखिए, टू इनकैप्सुलेट taking a break for 1 year travel or work before university has its own benefits, such as developing the understanding of a better understanding of the world and to be able to value money. However, there may also be some problems associated with it, including anxiety due to feeling homesickness and the risk for students not returning to universities because of feeling more independent. Therefore, it is necessary to weigh the benefits against the drawbacks carefully before coming to a decision. So this is sort of a conclusion which is already designed for you. Just follow the template and there you are. So as simple as that. तो ये कितना easy है आपको आइडिया हो गया होगा. So I'm going to share the templates with you guys and templates जो हैं वो basically already मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ. Maybe some of you joined it later. तो उनके लिए जो है ना फिर मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा. So कोई सवाल है तो पूछिए quickly. नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि रिपोर्ट्स की भी टेम्पलेट है. बेसिकली जो है ना रिपोर्ट की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. तो रिपोर्ट्स के सेंटेंसेस के टेम्पलेट्स हैं. पूरे रिपोर्ट का टेम्पलेट जो है इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. 1-2 बने हुए हैं लेकिन वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि वो हर रिपोर्ट में चल सकेंगे.
क्योंकि रिपोर्ट में ना ग्राफ्स जो है वो उनमें जनरल आइडिया होता है। तो मैं बहरहाल आई एम गोना शेयर इट विद यू, लेकिन जाहिर है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हर जगह पे वो आएंगे नहीं, लेकिन एक सेंस सही है। बहुत अच्छा डेवलप होगा आपके लिए, मैं शेयर करूंगा। ओके सर, थैंक यू। तो मैंने कुछ क्लासेस में ना ऐसे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं वर्ड फाइल, जैसे मैंने कल ऐसे के लिए कुछ पॉइंट्स बताए टाइप करते हुए, तो ऐसे टाइप करते करते कुछ सेंटेंस बनाए हैं, कुछ फाइल्स ऐसी पड़ी हैं, कुछ बुक्स हैं जहां पे टेम्पलेट सेंटेंस हैं, कुछ एक दो फाइल्स ऑलरेडी टेम्पलेट्स की हैं, तो मैं वो शेयर करूंगा, तो डू चेक देम। तो आपको एक बहुत ही अच्छा वहां से व्यू मिलेगा, यानी मतलब एक आइडिया अच्छा डेवलप होगा। ये प्रॉमिस करना बहुत महाल है कि रिपोर्ट के लिए फुल टेम्पलेट, ऐसे के सातों टाइप्स के लिए हैं। 5 के लिए मैंने खुद भी अभी इसी तरह, जैसे ये एक है तो 5 के लिए मैंने डिजाइन किया, 2 के लिए मैंने नहीं किए हुए। कौन कौन से मैंने नहीं किए मैं बताता हूँ। कॉज सोल्यूशन मैंने नहीं किया, कॉज एंड इफेक्ट मैंने नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए मैंने कर लिया हुआ है, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन से सोल्यूशन का पैराग्राफ मिल जाता है। cause जो है वो प्रॉब्लम को you just have to convert like problem into cause, and that's more than enough. And when it comes to like cause and effect, तो cause अगर already है तो effect is either an advantage or disadvantage. So you pick one paragraph from this question type, तो भी हो जाता है। मतलब ये कि उसके अलग से करने की जरूरत नहीं है। If you have common sense, you can also use it from there. Otherwise, I have developed one for double argument. I have developed one for agree or disagree. I have developed one for advantage, disadvantage without opinion, advantage, disadvantage with opinion. I've developed one for problem and solution. So, I mean, it's going to help you a lot. So, now the rest is, of course, okay. Then the ball is now in your court. So, अब देखिए कि अगर आप इसको यूज कर सकते हैं तो यूज करके essays लिख के इनके हिसाब से भेजिए, जहां पे there will be a technical issue. I will be sending this feedback